Hi everyone, my name is Binch Machi and welcome to my channel Machi Tutorial. Last video में Coulomb's force inverse of position factor and principle of superposition of force विषय पढ़ी जब आप देखी ना देन डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक भी देती आप सहित देखी दिंतु आम चैनल जब नुआ देन सब्सक्राइब करूँ जहाँफल आम चैनल को पाइपर आप मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड आज कनसेप्ट होची कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and according to macroscopic point of view electric charges can be considered as continuously distributed in space and there are three types of continuous charge distribution, that is linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. Means macroscopic point of view अनुसार electric charge space रे continuously distributed होइथांते और there are three types of continuous charge distribution, that is linear charge distribution means जेतेबेले charge माने गोटे लाइन रे continuously distributed होइथिबे and surface charge distribution means जेतेबेले charge से गोटे सरफेस रे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होइथिबे एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जेतेबेले चार्ज वॉल्यूम रे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होइथिबे फर्स्ट होची लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड along a line whose cross section is negligible in compared to the length then this type of distribution is called linear charge distribution means जेतेबेले इलेक्ट्रिक चार्जेस गोटे लाइन रे जहार क्रॉस सेक्शन यार लेंथ थारू नेग्लिजिबल होइथिबो देन सही टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोली कहा जाए एंड लिनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इन ए लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो पर यूनिट लेंथ रे जेते अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होई थांदी ताको लिनियर चार्ज डेंसिटी बोली कहा जाए आउ दैट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा एंड यार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होची लैम्बडा इज इक्वल टू dq by dl where dq is small charge and dl is small length and dq is equal to lambda dl hobo and the total charge can be find by integrating both sides of equation this now so जदि equation जदि हमें इंटीग्रेशन करबा both sides रे then से लाइन रो टोटल चार्ज को हम फाइंड करि परबा and q is equal to इंटीग्रेशन ऑफ lambda dl हमें फाइंड करि परबा जहार लिमिट अनुसार हमें पुट करके तार लाइन रो टोटल चार्ज हमें फाइंड करि परबा डायमेंशन ऑफ lambda होची lambda is equal to q by l कहीं ना फॉर्मूला अच्छे dq by dl तो q by l होबो एंड q रो डायमेंशन होची a1 t1 एंड l रो होची लेंथ दैट इज l1 एंड यार डायमेंशन होची a1 t1 एंड l minus 1 एंड यूनिट ऑफ lambda होची ऊपर q अछि एंड तळे l दैट इज q माने होची कूलम एंड l माने लेंथ दैट इज मीटर coulomb per meter. Next is surface charge distribution. When the charges are distributed on the surface of a body, then this type of distribution is known as surface charge distribution. So जेतेबेले charges माने गोटे बॉडी रो सरफेस ऊपर कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होई थांती देन से टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोली कहा जाए एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी होचे द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया इन ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो जितेबाला गोटे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रे पर यूनिट सरफेस एरिया रे जिते अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होइतांती ताको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोली कहा जाए एंड दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होची सिग्मा इज इक्वल टू dq by dA तो एठी dq होची स्मॉल चार्ज एंड dA होची स्मॉल सरफेस एरिया एंड एठी फ्रॉम इक्वेशन 1 dq इज इक्वल टू सिग्मा dA होबो एंड ए इक्वेशन में जब हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन करबा देन सरफेस रो टोटल चार्ज को हम फाइंड कर परबा दैट इज q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dA एंड डायमेंशन ऑफ सिग्मा होची q by a तो एठी q होची चार्ज एंड a होची एरिया तो यार डायमेंशन हबो q रो होची a1 t1 एंड a रो होची एरिया दैट इज l2 तो यार डायमेंशन हबो a1 t1 l minus 2 एंड यार यूनिट होची यूनिट ऑफ सिग्मा दैट इज q by a तो q माने होची कूलम एंड एरिया होची मीटर स्क्वायर तो यूनिट ऑफ सिग्मा इज कूलम पर मीटर स्क्वायर सो नेक्स्ट होची वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्पेस देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होची वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो जेतेबेले चार्ज गोटे वॉल्यूम रे डिस्ट्रीब्यूटेड होइथांती कंटीन्यूअसली देन दै टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोली कहा जाए और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माने
the amount of charge distributed per unit volume. For unit volume रे जेते amount of charge distributed होइथांती ताको volume charge density बोली कहा जाए, and that is denoted by rho. And the mathematical expression is rho is equal to dq by dv, where dq is small charge and dv is small volume. And from equation this dq is equal to rho dv hobo, ଆଉ both side जब इंटीग्रेशन करवा देन वॉल्यूम रो टोटल चार्ज हम फाइंड कर परबा, दैट इज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर rho dv. एंड डायमेंशन ऑफ rho होची rho इज इक्वल टू q by v, एटी q होची 80, दैट इज a1 t1, एंड v रो होची l3, दैट इज वॉल्यूम, एंड यार डायमेंशन हबो a1 t1 l minus 3, एंड यार यूनिट होची यूनिट ऑफ rho, दैट इज कूलम पर वॉल्यूम, दैट इज कूलम पर वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब यार यूनिट. तो ए वीडियो रेत की नेक्स्ट वीडियो पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड तार प्रॉपर्टीज विषय. और जो वीडियो किसी शिखा पाँच देन वीडियो को लाइक करेंगे भूलिए. थैंक यू.